करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट ने काफी प्रोविजन में सुधार किया है। गवर्नमेंट हैज आस्क्ड कि हमको कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं चाहिए कि जो बिजनेसमैन है उसको जेल में जाना पड़े। तो दिस हैज बीन फॉरवर्डेड बाय प्लानिंग कमीशन, बीन फॉरवर्डेड टू गिवन टू प्लानिंग कमीशन, कि जो लोग बिजनेस करते हैं उससे कभी कभी बिजनेस में गलतियां हो जाती है, तो इट शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज। इसमें एक प्रोविजन रेरा में भी थी। वो रेरा की प्रोविजन में जो थी, इसकी वजह से इन्होंने ये चेंज किया है, विच इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 7 मई 2026। पहले रेरा में अगर तुमने कुछ काम किया, एलओटी फेलिंग टू कंप्लाई विद द रेरा ऑर्डर्स may face 1 year in prison along with 10% property of the cost का जो पैसा भरना पड़ता था। Now new provision, anyone doing a business should not be liable for criminalized penalty। उसको जेल में नहीं डालने की जरूरत। They are a kind person, not a kind person, but they are not supposed to go to a jail. That is what the law says. The imprisonment had been removed from 2007 May 2002. Any provision, any mischief done by a person who is managing the property should not be put into jail, but he can be penalized by way of a 10% of a monetary penalty. This is one-liner. This is one-liner. I'm not going into this detail. This is nothing more than that. We have got number of talks which you can take it. We are there including crypto, 153C. Okay. Thank you very much.